Hello dear student, today we are going to solve practice set 15.6. Question 1 is given as radii of circles are given below, find their areas. हमें रेडियस दिया हुआ है, हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है. वी नो द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर. हियर रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन. फर्स्ट एग्जाम्पल, radius of circle is equal to 28 centimeter, that is r is equal to 28 centimeter. We have to find out area of circle. Area of circle, formula for area of circle is pi r square, where pi is 22 upon 7. Then put the value of r and pi in formula. 22 upon 7 इंटू 28 का स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28. अभी 7 से 28 को डिवाइड करेंगे. 7 1s are 7, 7 4s are 28. So here we write as 22 into 4 into 28 is equal to 22 into 4, that is 88 into 20 is equal to 2464 square centimeter. Our next example is radius of circle is given as 10.5 centimeter. Here we write as area of circle is equal to pi r square. Here pi is 22 upon 7 into r 10.5 उसका स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 10.5 इंटू 10.5. यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार लिखा हमने. विथ 7 से 10.5 को डिवाइड करेंगे. 7 7, रिमेनिंग 3 एंड 35 1.5 इज इक्वल टू 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5. हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Our third example is radius of circle is equal to r is equal to 7.5 centimeter. R is equal to 7.5 centimeter. We have to find out area of circle. Area of circle is equal to pi r square. Again put the value of pi, that is 22 upon 7 into r square 17.5 का स्क्वायर. यहाँ पे हम लिखेंगे 22 अपॉन 7 इंटू 17.5 इंटू 17.5. यहाँ पे 7 से 17.5 को डिवाइड करेंगे. 2.5 22 इंटू 2.5 इंटू 17.5. यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन वी गेट आंसर एज 962.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज एरिया ऑफ सम सर्कल आर गिवन बिलो. Find their diameters. First example is
area of circle is given as 176 square centimeter. Here area of circle is given, area of circle is equal to 176 square centimeter, that is given to us. We have to find out diameter. Formula for area of circle is equal to pi r square. यहाँ पे हम लिखेंगे 176 एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पुट द वैल्यू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 176. यहाँ पे हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है. 176 इंटू 7/22 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो 22 से 176 को डिवाइड करना है. इज इक्वल टू 22 से 176 को डिवाइड किया तो आंसर 8 मिलता है. 8 इंटू 7 इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू 56 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो वी गेट वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56. Take square root on both sides, so we get value of r as under root 56 centimeter. Diameter of circle is equal to 2r is equal to 2 into under root 56 is equal to 2 into under root 56 centimeter. Second example is given as area of circle is equal to 394.24 square centimeter. We have to find out diameter. Here we write formula for area of circle is equal to pi r square. So here we write as 394.24 is equal to 22/7 into r square. So r square is equal to 394.24 into 7/22. अभी 22 से 394.24 को डिवाइड करेंगे. उसका आंसर आता है 17.92/1 इंटू 7 इज इक्वल टू 125/44 r square. r is equal to under root 125.44. So we get the value of r as 11.2 centimeter. Our third example, area of circle is equal to 12,474 square centimeter. So here we write as formula area of circle is equal to pi r square. Put value of area of circle, that is 12,474 is equal to 22/7 into r square is equal to 12,474 into 7/22 is equal to r square is equal to
22 से 12,474 को डिवाइड किया तो आंसर आता है 567. 567 into 7 is equal to r square. Again multiply, we get 3969 is equal to r square. So r is equal to under root 3969. We get answer as 63 centimeter, that is radius. So here we write as diameter of circle is equal to 2r into is equal to 2 into 63, that is 126 centimeter.